ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે ગુજરાતી પાઠ 1નો આગળનો ભાગ ભણીશું. ગયા પાઠમાં આપણે પાઠની સમજૂતી આપી હતી, એ તમે જોઈ શકો છો. આગળ આજે આપણે પાઠ 1નું પઠન કરીશું. પાઠ 1માં વાર્તા છે વાંસળી વાળો. એક હતું ગામ, એમાં ઘણા ઉંદર, ઘરમાં ઉંદર, બાગમાં ઉંદર, પેટીમાં ઉંદર, કબાટમાં ઉંદર. એનું मतलब છે एक ગામ હતું, એમાં ઘણા બધા ઉંદર, ઉંદર એટલે चूहे, बहुत सारे चूहे थे. जगह जगह पर चूहे, घर में, बाग में, पेटी में, कबट में, सब जगह पर चूहे ही चूहे. मोटा उंदर, नाना उंदर, जाड़ा उंदर, पातड़ा उंदर, काड़ा उंदर, धोड़ा उंदर. જ્યાં જુઓ ત્યાં उंदर જ उंदर. मोटे थे चूहे, पतले थे, छोटे थे, काले थे, सफ़ेद थे. जहाँ पर भी देखो वहाँ पे चूहे ही चूहे थे. सूखे खावा ना दे, सूखे पीवा ना दे, सूखे बैसवा ना दे, सूखे ऊँघवा ना दे, सूखे चालवा ना दे, सूखे फरवा ना दे. मतलब आराम से बैठकर खाने भी नहीं देते थे, पीने भी नहीं देते थे. इधर से उधर आना जाना सब कुछ उनका चलता रहता था. चूहों का तो बहुत परेशान करते थे वो सबको. न तो वो आराम से बैठने देते थे और न उनको सोने देते थे. जब वो सोते थे उनके ऊपर से वो कूदाकादी करते थे, तो आराम से लोग सो भी नहीं सकते थे. सूखे चालवा ना दे, सूखे फरवा ना दे. जब वो लोग चलते थे तो बीच बीच में चूहे आ जाते थे, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे. आम जाओ तो चूँ चूँ चूँ, तेम जाओ तो चूँ चूँ चूँ, જ્યાં જાઓ ત્યાં चूँ चूँ चूँ. जहाँ पर भी जाओ वहाँ पे चूहों की आवाज़ चूँ 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 आती ही रहती थी. હવે શું કરવું, હવે ક્યાં જવું? लोग બધા કંટાળ્યા. अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा सोचकर लोग बहुत परेशान हो गए थे. एक दिवस एक વાંસળીવાળો આવ્યો. જરા જેટલી દાઢીવાળો, લાંબા લાંબા વાળવાળો, લાલ ટોપી પહેરી છે, પીળો ડગડો પહેર્યો છે. लोग कहे भाई हमें तो कंटाड़िया. अब एक दिन क्या हुआ, एक बांसुरी वाला आया. बांसुरी वालों मतलब बांसुरी बजाने वाला जो होता है उसे कहते हैं बांसुरी वाड़ो. बांसुरी वाड़ो આવ્યો. उसकी छोटी सी दाढ़ी थी और उसके बाल जो थे वो थोड़े लंबे लंबे थे. उसने लाल कलर की टोपी पहनी थी और पीले कलर का झबला पहना था. तो उसको देखकर लोगों ने कहा कि अरे भाई अब तो हम कंटाड़ गए हैं. आ उंदर थी हारी गया, उंदर सगड़ा काढ़ो तमे, 1000 रुपया दइए अमे. कि हम तो ये चूहों से बहुत परेशान हो गए हैं, तो ये तुम चूहे निकाल दो और हम तुमको 1000 रुपये देंगे. વાંસળી વાળો રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહ્યો ને વાંસળી વગાડવા લાગ્યો. પછી તો પૂછવું જ શું, દોડતા દોડતા ઉંદરો આવવા લાગ્યા. કોઈ નાચતા આવ્યા, કોઈ કૂદતા આવ્યા, કોઈ દોડતા આવ્યા, કોઈ ઘસતા આવ્યા. ચારે કોર ઉંદર જ ઉંદર, ચારે કોર ચૂં ચૂં ચૂં. વાંસળી વાળો આગળ ચાલે, उंदर બધા પાછળ દોડે. अब વાંસળી वाले ने क्या किया, वो रोड के बीच में रस्ता वच्चे ઊભો થઈ ગયો અને વાંસળી વગાડવાની ચાલુ કરી. પછી તો શું થયું, જ્યાં જ્યાં ઉંદર હતા ત્યાંથી દોડતા કૂદતા બધા ઉંદર એની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. પછી વાંસળીવાળો આગળ આગળ અને ઉંદર એની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. એટલામાં નદી આવી. વાંસળીવાળો નદીમાં ઉતર્યો ને આગળ ચાલ્યો. ઉંદર પણ નદીમાં ઉતર્યા. વાંસળીવાળો નદી ઓળંગી ગયો, ઉંદર બધા પાણીમાં ડૂબી ગયા. लोग બધા राजी થઈ ગયા. इतने में आगे जाकर एक नदी आई. नदी में वांसड़ी वाला नदी में नीचे उतर गया और चूहे भी उसके पीछे पीछे नदी में नीचे उतरने लगे. तो आगे क्या हुआ, वांसड़ी वाले ने तो क्या किया, नदी को पार कर लिया. ओढ़ंगी गयो मतलब पार कर लिया. उसने नदी को पार कर लिया, लेकिन चूहे तो नदी को पार नहीं कर पाए, तो वो नदी में डूब गए. और लोग जो थे वो बहुत ही खुश हो गए, राजी થઈ ગયા मतलब बहुत खुश हो गए. વાંસળી વાળો ગામમાં પાછો આવ્યો. તે બોલ્યો, લાવો ભાઈ 1000 રૂપિયા. લોકો કહે, રૂપિયા? કેવા ને વાત કેવી? જા છાનો માનો ચાલ્યો જા. ઉંદર માનવાના मारवाना ते 1000 रुपया होए. अब वांसड़ी वाला जो था वो फिर से आया गांव में और उसने सबको बोला कि अब मेरे 1000 रुपये दो. तो सब लोगों ने कहा कि 1000 रुपये किसके, उंदर मारने के कोई 1000 रुपये थोड़ी होते हैं. अब तो आप तुम ऐसे ही चले जाओ, छानो मानो चालो जा मतलब ऐसे ही बिना पैसे लिए चुपचाप चले जाओ.
વાંસળીવાળો કાંઈ બોલ્યો નહીં. વાંસળી લઈ તેણે વગાડવા માંડી. વાંસળી વાગી પછી પૂછવું જ શું. अब बांसुरी वाला कुछ नहीं बोला. उसने क्या किया, अपनी बांसुरी ली और उसने चालू कर दिया बजाना. अब बांसुरी जब बजने लगी उसके बाद तो पूछना ही क्या. एक छोकरू बहार आव्યું, બીજું છોકરું બહાર આવ્યું, ત્રીજું છોકરું બહાર આવ્યું. બધા છોકરા બહાર આવ્યા. ઘરમાંથી આવ્યા, બહારથી આવ્યા, નાના આવ્યા, મોટા આવ્યા, જાડા આવ્યા, પાતળા આવ્યા, કાળા આવ્યા, ગોરા આવ્યા. આમ જુઓ તો છોકરા, તેમ જુઓ તો છોકરા. કોઈ નાચતું આવ્યું, કોઈ કૂદતું આવ્યું, કોઈ દોડતું આવ્યું, કોઈ ઘસતું આવ્યું. ચારે કોર છોકરા જ છોકરા, ચારે कोर हो हो. फिर जब बांसुरी वाले ने बांसुरी बजानी चालू की तो फिर तो क्या हुआ, सब जो गांव के बच्चे थे वो सब घर के बाहर आने लगे. एक आया, दूसरा आया, कोई घर के अंदर से आया, कोई घर के बाहर से आया. सब नाचते कूदते जो बांसुरी वाले के पीछे चलने लगे. जहाँ देखो वहाँ पे छोकरे ही छोकरे, मतलब बच्चे ही बच्चे, और जहाँ देखो वहाँ बच्चों की हो. अरे ઊભા રહો પણ છોકરા શાના ઊભા રહે. એ તો ચાલ્યા નદી તરફ. લોક બધા ગભરાયા. રખેને છોકરા પાણીમાં ડૂબી જાય. દોડીને તે નદીએ આવ્યા. લે ભાઈ વાંસળીવાળા, લે તારા 1000 રૂપિયા ને જા હવે તું બીજે ગામ. વાંસળીવાળો 1000 રૂપિયા લઈ ચાલતો થયો. अब सब जो उनके मम्मी पापा थे उनको बहुत मतलब चिंता हुई, परेशानी हुई. बच्चे नदी की तरफ जा रहे हैं तो सब पेरेंट्स तो बहुत परेशान होंगे. तो उन्होंने कहा अरे रुको रुको, लेकिन बच्चों ने कोई भी बात नहीं सुनी. ये तो चला नदी तरफ. फिर उन्होंने वो जब सब बहुत घबरा गए तो उन्होंने बांसुरी वाले को बोला कि अब आप अपने ये 1000 रुपये लो, हमारे बच्चों को छोड़ो और हमारे बच्चों को घर जाने दो. उन्होंने उसको बांसुरी वाले को 1000 रुपये दिए અને પછી શું થયું? હા, વાંસળીવાળો 1000 રૂપિયા લઈને બીજે ગામ જતો રહ્યો. સારું, આ પાઠની તમે સમજણ પડી ગઈ હશે. થેન્ક યુ.